जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञानपीठ। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर चैप्टर रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहा कि अपकमिंग एग्जाम पई आपण मानकु हेल्पफुल है। चलंतु स्टार्ट करिबा आज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंपोनेंट। एमानक मध्यरु कंप्यूटर कंपोनेंट कोउटा नहीं। CPU आमे जानि चंती सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वी कैन से। हार्ड डिस्क जोटा मेमोरी आमे कहि परिबा कंप्यूटर। मॉनिटर जोटा होची डिस्प्ले यूनिट आमे कहबा जोठी डिस्प्ले होई थाय कंप्यूटर रे ताको आमे कहबा मॉनिटर। डाटाबस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर और नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर वी कैन से। द राइट आंसर इज डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the main purpose of an ALU, that is ALU रो फुल फॉर्म कोन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बारंबार एग्जाम रे पचारे ALU रो फुल फॉर्म आउ ALU रो काम। तो आमे जानचंदी कंप्यूटर सिस्टम रे तीनोटी यूनिट अछि। गोटे होची ALU, another one is control unit, third one is memory unit। क्लियर? तो आमे जदी देखिबा ALU रो काम कोन ना रो आमे जानि परचंदी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मींस परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। के करे ALU। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। देखो आमे ALU देखिले, एबे देखिबा कंट्रोल यूनिट रो काम कोन। ये तो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करे नहीं कारण ALU रो काम एटा मैनेज डाटा फ्लो इन द सिस्टम। ओके, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ना मैनेज मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज हबो नहीं कारण ये कहार काम मेमोरी यूनिट रो काम कहार मेमोरी यूनिट। तो आमे जदी देखिया बी आउ सी मध्य रे तो कोठा हबो राइट आंसर ना कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखियो which register holds the address of the next instruction to be executed। को register टा hold करे address कोन कहार ना जो इंस्ट्रक्शन टा एग्जीक्यूट हबो नेक्स्ट ताहार एड्रेस टा को register होल्ड करे। प्रोग्राम काउंटर ना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर ना मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कोन हबो राइट आंसर ना राइट आंसर इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर कोन करे होल्ड करिवो एड्रेस जोटा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ला एड्रेस को होल्ड करिवो जोटा कि एग्जीक्यूटेड हबो नेक्स्ट। क्लियर? मन रखिबे कोन प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट। कोन कहला क्वेश्चन नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। गोटे कैरेक्टर जो बीट गोटे नंबर बीट रे रिप्रेजेंट हुए ताको हमें कौन कहबा कंप्यूटर सिस्टम रे ताको हमें कौन कहबा वर्ड साइज बाइट कैरेक्टर कोड वार्निंग कौन कहबा। राइट आंसर इज कैरेक्टर कोड, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर कोड। क्लियर? जेति के क्वेश्चन अछि पूरा पूरी इंपोर्टेंट हमें कहबा 3 स्टार क्वेश्चन सब अछि जोटा के बारंबार एग्जाम रे आछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। एटा एई थरो OSSC CGL एग्जाम रे आसी ए क्वेश्चन कोटा स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम रे कोटा हमें को मेमोरी यूनिट स्टोरेज यूनिट टाको हमें कहबा सबुठारो स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट बाइट बिट नेबल वर्ड कोटा कहबा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिट। Clear? Okay. Next question देखिबा what does the term fetch refer to in the context of the fetch decode execute cycle। fetch decode execute cycle रे fetch रो मीनिंग टा कोन fetch वर्ड टा रेफर करूची कोन ना the CPU retrieves the next instruction from memory, CPU decodes the instruction, CPU execute the instruction ना the CPU stores the result। कोन हबो राइट आंसर ना execute fetch means कोन retrieve। fetch means कोन हमें कहि परिबा fetch रो मीनिंग होची
or other name ame कहबा retrieve. That's why option number A is the right answer. The CPU retrieves the next instruction from memory. Clear? Next. In a von Neumann architecture, where are the data and instructions stored? von Neumann architecture, von Neumann जने computer scientist, तांको architecture अनुजाई where are the data and instructions are stored? कोठी data and instructions stored हुए? Right answer is main memory. कोठी store हुए? Data instruction main memory. CPU रे नुहे, cache रे नुहे. This is a memory, but here data not stored. Okay, register रे भी data store हुए नहीं. Main memory रे हमारा data और instruction जहाँ भी अच्छी सी store है के Next question, 9 number कहला which of the following represents the binary equivalent of the decimal number 15? 15 गोटे decimal number तार binary number कौन हम? अबे जानते कंप्यूटर को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे बाइनरी डिजिट और मशीन लैंग्वेज दैट रिप्रेजेंट ए 0 एंड 1 क्लियर तो आमे डेसिमल टा को लैंग्वेज रे को नंबर रे कन्वर्ट करियार अछि बाइनरी रे दैट मींस 15 टा बाइनरी रे कले कोन हो तो देखंतु केमिति कैलकुलेट हुए बाइनरी आमे सब बेले डेसिमल को 2 रे डिवाइड करबा मींस एलसीएम नवा एंड रिमाइंडर जोटा हबो तार सेटा हो बाइनरी किपरि देखंतु एटा को हमें 2 रे डिवाइड करे 2 7 जा 14 रिमाइंडर केते रहबो 1 अगेन 2 3 जा 6 रिमाइंडर केते हबो 1 देन 2 1 जा 2 रिमाइंडर केते हबो 1 दैट मींस कोन हबो 1 1 1 1 1 1 चारोटी 1 दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्लियर जदी क्वेश्चन एमिति आसे 1 चारोटी 1 को हमें जदी ए जो बाइनरी को डेसिमल ले हम कन्वर्ट करिया अछि केमिति करिवे केमिति करबे ना 1 into 2 रो पावर फर्स्ट 1 तापर 2 रो पावर तापर केतेटा डिजिट अछि केतेटा डिजिट अछि तीनोटी 3 प्लस नेक्स्ट 1 into 2 रो पावर तापर केतेटा डिजिट अछि दीटा 2 प्लस 1 रो पावर केतेटा डिजिट अछि 1 तो 2 रो पावर 1 देन 1 into 2 रो पावर आउ किछि 9 नंबर 0 दैट मींस एटा केते हिजबो 8 प्लस एटा केते हिजबो 4 प्लस एटा केते हिजबो 2 एटा हैला 1 तो ये इक्वल टू 15 क्लियर तो किपरि हमें बाइनरी रो सॉरी डेसिमल रो बाइनरी कन्वर्ट करबा बाइनरी रो डेसिमल कन्वर्ट करबा बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 10 नंबर क्वेश्चन which of the following components is responsible for storing data temporarily during processing एमानक मध्यरु को कंपोनेंट टा responsible for storing data temporarily hard drive ram that is random access memory CPU na ROM full form होचे read only memory कोडा हमें समस्त जानि चंती B that is RAM this is volatile in nature कोन कहबे हमें volatile in nature ये temporarily data को store करि थाए during processing को मेमोरी टा RAM random access memory clear next 11 number question लिखबा Which of the following is the correct order of the CPU components that process data? CPU components that process data in a correct order रे हमको सजेबार अछि कोन फास्ट आसीबो देखिया ना प्रथमे मन रखिबे रजिस्टर आसीबो देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आसीबो देन कंट्रोल यूनिट आसीबो ओके ऑप्शन नंबर डी एटे सी आउ डी देखो एटे डिफरेंस अछि रजिस्टर तापर कंट्रोल यूनिट तापर अरिथमेटिक लॉजिक नो फास्ट आसीबो रजिस्टर देन आसीबो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देन आसीबो कंट्रोल यूनिट जेतबे हमर डाटा टा प्रोसेस हो क्लियर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहला व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कैश मेमोरी रो प्राइमरी पर्पस को स्टोर large amount of data store frequently accessed data to speed up processing store programs na store permanent data the right answer is option number B that is store frequently accessed data to speed up processing speed करता है प्रोसेसिंग को स्पीड करता है अब फ्रीक्वेंटली डाटा को एक्सेस करता है मन रखियो ए टर्म टा को मन रखियो फ्रीक्वेंटली आ स्पीड किए करता है ना कैश मेमोरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 13 नंबर which of the following is a characteristic of RISC architecture RISC architecture characteristic का कौन complex instruction set na multiple cycle per instruction
The simple instruction that execute in a single cycle a small number of register. कौन होगा right answer? The simple instruction that execute in a single cycle, that is under RISC architecture, ARISC architecture. Okay, simple instruction that execute in single cycle. Clear? Next question koichi, in microprocessor the program counter, that is PC, contains the address of the what? आम एटा ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर और पीसी रो क्वेश्चन टा ऑलरेडी सॉल्व करके आछन डिस्कशन करि साछन. पीसी रो काम कोन जे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लो एड्रेस को स्टोर करतो है, राइट. तो एठी ऑप्शन कोड अछि देखंतु ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, तार एड्रेस को से कोन करबो स्टोर करबो. क्लियर? 14 नंबर रो क्वेश्चन ला आंसर. नेक्स्ट, which of the following is the type of secondary memory? Secondary memory कोडा या तो RAM, cache, hard disk, register कोडा हबो. इजी क्वेश्चन अछि. हमें जानछो RAM टा प्राइमरी मेमोरी, cache भी प्राइमरी मेमोरी, register भी प्राइमरी मेमोरी. These are primary, but hard disk is the secondary memory. Clear? Next, the two main types of memory used in computers. Computer रे को दीटा main memory हमर यूज हुए, main type of memory, RAM ROM, cache RAM, ROM flash ना disk RAM. जानि छन समस्त RAM और ROM. Yes or no? Random access memory, read only memory. Next question, what is the primary function of the stack in a computer architecture? Stack रो काम कोन? Temporary storage of data, store the operating system, store results of arithmetic operation, na store data to be processed. कोडा हबो. Stack रो काम कोन? Stack रो काम होची temporary storage of data. Data को temporarily कोन करिवो स्टोर करिवो. कार काम stack. मन रखिबे stack कोन फॉलो करे ना LIFO. कोन LIFO, last in को एल्गोरिथम फॉलो करे LIFO, last in first out. मन रखिबे last in first. ये कोन के फॉलो करे? stack एल्गोरिथम. गोटे stack रो एल्गोरिथम कोन last in first out. ओके, जे लास्ट रे एंट्री करथो, फॉर एग्जांपल दिस इज stack मेमोरी. कोन stack मेमोरी. ओके, रैक जमिति हमर रैक रे जमिति रखा जाय था जिंस, stack रे सेपरी हमर जिंस रखा जाय. तो एठी सपोज 1 प्रथमे जतले 1 एंट्री हला से कोड स्टोर हला 180, 2 एठी 3 4. जतले एग्जिट हबो डाटाटा से कोन हबो? फर्स्ट हमर 1 एंट्री हेतिला बट 1 एग्जिट हबो नै, जे लास्ट एंट्री हेछि से एग्जिट हबो. तो एग्जिट हबो 4 आगे एग्जिट हबो, देन 3 सेकंड रे, देन 2, देन 1. सो it follows the algorithm last in first out. Okay, okay. FIFO, that stands for first in first out. First in first out. ये के फॉलो करे ना Q. के फॉलो करे Q. जदि हमें देखिबा टिकट काउंटर रे जे फर्स्ट लाइन ले जे फर्स्ट एंट्री करथिबो से फर्स्ट टिकट को काटि के जिवो. ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ FIFO. क्लियर? नेक्स्ट, 18 number question कहला, which of the following is a property of a hard disk drive, HDD. hard disk drive रो property टा कोन? एमाने को मतलब को properties टा फॉलो करे hard disk drive? non volatile storage, volatile storage, extremely fast access time, used for temporary storage. कोन हबा एटा 18 number question ना non volatile storage, permanently store करता है ये hard disk drive, HDD. This is a secondary memory. हम कहता है कि मेमोरी कोई परिबा secondary memory. Okay, next question देखिबा. What does the instruction move a comma b mean in assembly language? Assembly language रे ए instruction लो meaning कोन? ऑप्शन कहला add a and b, move the contents of register a to register b, move the contents of register b to register a, subtract b from a. से कौन कहछि move a comma b. या माने होछि assembly language रे move the contents of register b to register a. Clear? जदि एमिति क्वेश्चन थांता move, ओके, mov b a, या माने कोन a रु b को मूव करला. क्लियर? a रजिस्टर रु b को मूव.
बट एटी कौन देछि फास्ट ए देछि कॉमा बी दैट मींस बी रु ए को मूव कर बुझियला लास्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम दैट इज स्टैंड्स फॉर मन रखिबे फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी यार काम कोन ना ये को टाइप रो मेमोरी हमें कहबा वोलेटाइल और टेम्पररी नॉन वोलेटाइल परमानेंट नॉन वोलेटाइल टेम्पररी कोन होबा राइट आंसर 20 रो ना ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल परमानेंट ओके रैम टा होची हमर कोन यदि रैम कहबा हमें कोन रैम इज वोलेटाइल एंड टेम्पररी क्लियर सो थैंक यू तो आशा करूची आपण माननको क्वेश्चन गुडी को भलो लागि थिबो तो ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम तो जदि किछि भी डाउट अछि कमेंट सेक्शन में पचारंतु मु ट्राई करबी सॉल्व करबा को तो लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु।